Hello everyone, welcome back to Weekend Academy. So today in this video, we are going to discuss some important previous year questions from the topic Plant Kingdom, a very important topic from biology that keeps showing up in your ND and CDS exams, CAPF exams as well. Let's go ahead and solve these PYQs one by one. The seeds of flowering plants are made up of what? तो seed होता क्या है? See, the male gamete will fertilize the female gamete. It turns into a one-celled thing called zygote. धीरे धीरे the zygote grows into the embryo and then the embryo becomes the seed. ठीक है, अब embryo जो होता है वो तुम देखोगे seed का एक coating होता है, अंदर embryo होता है, that embryo is coated by that coat and उसके आसपास थोड़ा fluffy होता है seed का अंदर का एरिया. एक्चुअली वो फूड रिजर्व होता है कि जो अंदर का एम्ब्रियो है उसको उससे न्यूट्रिशन मिलेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्ब्रायो, food reserves and coat. These are the things that seeds of a plant are made up of. The colorful part of the sunflower or marigold is what? So the question is कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के बीच पे जो वो कलरफुल एरिया होता है वो एक्चुअली में क्या है? इट इज नथिंग बट द फ्लावर. सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट का जो कलरफुल जगह है वो फ्लावर ही. ठीक है, उसी से बाद में द pollination and everything takes place and then reproduction happens. Which one of the following statements about classification of plants is correct? Option A, thallophytes have a well differentiated body design. Thallophytes means algae. Algae को thallophytes इसलिए कहते हैं because their body is a thallus like structure. कुछ differentiation नहीं है. You won't understand कि पेड़ पत्ता कौन सा है, root कौन सा है. There is no differentiation. So A is false. All pteridophytes are phanerogams. Phanerogams are those plants that produce seeds. Gymnosperms and angiosperms are called phanerogams because they have seeds. Pteridophytes do not have seeds, so they are not phanerogams. ठीक है? Funaria is a fungi. Funaria is not a fungi. Last one. Vascular system is not found among bryophytes. This is correct. Bryophytes में vascular system नहीं होता. Vascular system is first observed in pteridophytes. That too not proper. Proper आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तक जाके आपको proper xylem और phloem दिखता है. Coming to the next question. Which one of the following is used as a binder in paints? Paints में इसमें से कौन सा as a binder use होता है? The answer is silicone. Silicones are used as a binder in paints. Coming to the next question. In a typical flower, germinating pollen grains pass through several plants of the gynoecium. Before they reach the ovule, a list of the parts of the gynoecium is given below in different combinations. Choose the combination that represents the correct sequence of the pollen tube. देखो तो होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन है उसको सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर रखा जाता है. ठीक है, स्टिग्मा से वो ग्रो होता है थ्रू द स्टाइल. स्टाइल एक ट्यूब है, फिर स्टाइल में ग्रो होके वो पहुंचता है ओवेरी के अंदर जहां वो ओव्यूल में जाके एग को, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है. तो द करेक्ट सीक्वेंस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Coming to the next question. During seed germination, the part of the embryo which grows into the root is what? The answer is radicals. एम्ब्रायो के नीचे छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर कॉल्ड रेडिकल्स. ये रेडिकल ही बाद में डेवलप होकर रूट बनते हैं जब वो बड़ा प्लांट बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो 5 किंगडम्स है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो इन किंगडम्स में कौन सा किंगडम है जिसमें बस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं? देयर आर 2 kingdoms that are completely unicellular. It is Monera and Protista. Coming to the next question.
Statement 1, phytoplankton produce most of the organic carbon in the ocean. Yes, that's correct. Algae are produced in the cold water biome. Statement 2 is wrong. Why? Because they need sunlight. Cold water biome में algae का होना is not possible. Statement 1 is correct. So the correct answer is statement 1 is true, but statement 2 is false. Coming to the next question, the genetic material of bacteria is found in what? Bacteria में proper nucleus नहीं होता. They have a nucleoid region. Why? Because उनका nuclear membrane ही नहीं. They are prokaryotes. The correct answer is D, ribosomes. They have RNA present there in form of genetic material. Please don't confuse it. अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता तो आंसर न्यूक्लियस ही होता. But bacteria is prokaryote. They don't have a proper nucleus. They have a nucleoid. Why? Because इनका nuclear membrane ही नहीं. Coming to the next question. Living things are grouped into subgroups like plant kingdom, animal kingdom. Which one of the following is not correct for animal kingdom? A. Cannot make their own food. Yes. Animals cannot make their own food. उनको बाहर से खाना चाहिए होता है. We are heterotrophs. वो किचन में जो हम खाना बना रहे हैं वो खरीद के लाके बाहर से बना के फिर खा रहे हैं. प्लांट्स अपने खाना अपने बॉडी के अंदर बना लेते हैं. बॉडी कंटेन सेलुलोज. नहीं, हमारे बॉडी में सेलुलोज तो होता नहीं. एनिमल्स डोंट हैव सेलुलोज. डू नॉट हैव क्लोरोफिल. यस, वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल. ठीक है, दिस इज ट्रू. Migrate from one place to another. Yes, animals can move from one place to another. So the incorrect statement पूछा है. Incorrect statement option B है. Body contains cellulose. हमारे बॉडी में सेलुलोज नहीं होता है. Cellulose is present in the cell wall of plants. Animal cells don't have a cell wall. Option B is the incorrect statement. Option B is our answer. Coming to the next question. Which one of the following statements about bryophytes is not correct? The plant body is a gametophyte. They are also called the amphibians of the plant kingdom. The plant body is attached to the substratum by rhizoids. Specialized water conducting tissues are present. Now, the question is that which of the following is not correct? See, the incorrect statement here is that bryophytes have specialized water conducting tissues. Bryophytes don't have any vascular system. They do not have conducting tissues. So कोई vascular system है ही नहीं, तो option D is the wrong answer. Coming to the next question, which one of the following is not a characteristic of fungi? Cell wall is made up of chitin. Yes, it is true. Filamentous mycelium is present. Yes. Fungi are made up of hyphae. वो hyphae का जो गुच्छा होता है filaments का, it is called the mycelium. Can carry out photosynthesis? नहीं, photosynthesis के लिए you need chlorophyll. Fungi में chlorophyll नहीं होता. They cannot do photosynthesis. So option C is our wrong answer. Option C is the correct answer for this. It is the incorrect statement. Coming to the next question. Relationship between a flower and honeybee will help the flower for what? For pollination. Honeybee एक flower से pollen grains लेगा, दूसरे flower में वो pollen grain drop कर देगा. Pollination के लिए honeybee is used. In angiosperms, pollen grains germinate to produce two male gametes. Both of which one of the functions is carried out by these gametes? Pollen grain में दो male gametes होते हैं. तो पूछ रहा है कि इन दोनों का काम क्या है. तो एक्चुअली होता क्या है कि जो एक मेल गैमेट, दोनों में से एक मेल गैमेट तो अपना नॉर्मल काम करेगा कि फीमेल गैमेट को जाके फर्टिलाइज करना. जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो बेसिकली ओव्यूल के अंदर एक डिप्लॉयड न्यूसेलस होता है. उस डिप्लॉयड न्यूसेलस में दूसरा मेल गैमेट कंबाइन होके वो उसको एक ट्रिप्लॉयड चीज बना देता है कॉल्ड द एंडोस्पर्म. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. एक मेल गैमेट एक के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा. The other one will fuse with the diploid secondary nucleus. This is also called the nucellus, and it will form the triploid endosperm. The endosperm is for the nutrition of the seed.
Next, the question is, what is the which of the following is the correct sequence during sexual reproduction in angiosperms? It is very easy. सबसे पहले egg होता है, egg फिर fertilize होके one cellular का zygote बनेगा, वो zygote divide होते होते एक embryo बनेगा, and then the embryo will develop into a proper seed. So the correct answer is egg, zygote, embryo, seed. Option A. The seeds of flowering plants are made up of what? ये तो क्वेश्चन पहले भी किया है हमने. So I am hoping that you know the answer already. It's option B. Embryo, food reserves, and the coat. Gametophytes of sexually reproducing flowering plants are what? Gametophytes diploid होते हैं. क्यों? क्योंकि एक गैमेटोफाइट वो है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. तो गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है. गैमेटोफाइट के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 2n में से सिंगल n वो अपने गैमेट में दे देता है जब वो उसको प्रोड्यूस करके निकालता है बॉडी से. तो गैमेटोफाइट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर. द आंसर इज ऑप्शन बी. And this is the last question. I want you guys to answer it for me. Which one of the following groups is the most abundant in terms of number of species identified? Options are option A fungi, option B green plants, option C bacteria, option D insects. Question को देख लीजिए अच्छे से. Now give me the answer for this question in the comment section below and tell me what do you think it is. ठीक है? I hope it was an informative session for all of you. We'll be back with another informative video for you guys. Till then, have a great time preparing for your exams. Have a disciplined life. All right. Good night. Subratri. Goodbye. Jai Hind.